So, what I'd request is after the event is over, please spend some time. I think it'll be a great opportunity for you to get exposed to what we are doing here and potentially benefit from all the innovation which is being done by our startups in construction management, in building environmentally sustainable buildings. Right? So some more, I talked about JARSH. Smart Check is for entry and access into buildings, etc. So I'll stop here. Thank you for coming, and hopefully we'll get to interact with some of you during the break. And good morning, sir, and welcome. Thank you. Thank you, MSR. So to begin our session, I want to invite my colleague, Saket, from CSR Estate to lead the next segment. Saket, over to you. Here is an inspiring story of a young state from India, Telangana, that delivered a century of development in less than a decade. Telangana growth model, envisioned by Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao, went beyond solutions and secured the future of its people, making Telangana a revolutionary state, providing safe drinking water to every household. A pioneering state, supplying 24 hours uninterrupted power supply to all sectors. An innovative state, making waves in the irrigation sector at international level, with world's largest multi-stage lift irrigation project and world's largest lakes rejuvenation program. An ideal state where farmers are not worried about the future and are reaping a golden harvest for their hard work. An inclusive state ensuring equity and dignified living for the vulnerable and downtrodden. A progressive state where women's safety and empowerment are more than catchy slogans. An enterprising state creating world-class robust ecosystem where industries are thriving. A futuristic state setting a benchmark for sustainable living for future generations. An ambitious state that has achieved an unparalleled inclusive growth across all sectors, creating a blueprint for the country to adopt and emulate. Telangana, inspiring India. Celebrating Telangana Formation Day. A very good morning to all of you.
On behalf of CREDAI Telangana and CREDAI Hyderabad, we welcome CREDAI Maharashtra who are here on their 3-day study tour, led by their President Pramod Kairnar Garu. And once again, welcome to Hyderabad, the most happening city in the country, under the leadership of our Honorable Chief Minister, Sri KTR Garu, and our MNUD Minister, Sri KTR Garu. I request our Honorable Minister KT Ramarao Garu to please come onto the stage. I request Shekhar Reddy Garu, our past National President, to hand over a plan to KTR Garu. Now I request Arvind Kumaru Garu, Special Chief Secretary, MNUD, to please come onto the stage. I request G. Ramreddy Garu, our National Secretary, to hand over a plan. I request Maharashtra President, Mr. Pramod Kairnar Garu, to please come onto the stage. Murli Krishna Reddy Garu, Chairman, CREDAI Telangana, to please hand over a plan. Sunil Kotwal Garu, Vice President, CREDAI Maharashtra Garu, to please come onto the stage. Indrasen Reddy Garu, President-elect, CREDAI Telangana, to hand over a plan. I request Prem Sagar Reddy Garu, President, CREDAI Telangana, and Rashekar Reddy Garu, General Secretary, CREDAI Hyderabad, to join on the stage. I request Rashekar Reddy Garu, General Secretary, CREDAI Hyderabad, to commence his welcome speech. Yeah, good morning all. Happy to see you all from CREDAI Maharashtra. We are family as a CREDAI, but you have came here all the way to see the growth and know the growth story of Hyderabad. And further know the man behind the growth and the success of Hyderabad and Telangana is Mr. KTR Garu. A big round of applause, please. Along with the government leadership and all that, the foundation pillars will be the officials. And we are fortunate we have the great officials, wonderful officials who are supportive all the time. And I will thank you, Arvind Kumar Garu, our Special Chief Secretary of MAUD. And thank you, Pramod Kairnar-ji and Kotwal-ji, coming all the way from Maharashtra to know about Hyderabad. We know, we are happy, we are proud, and we have to know how it is happening, why it is happening. So the growth story started maybe everyone thinks Hyderabad. You got to know, maybe heard about Hyderabad in 2004. IT was the moment at that time when government was taking in that particular segment only. Later on, 2009. Again, some other government came, they focused on rural development. Fortunate, we have the great visionary leader. After a struggle of 10 years, we got our Telangana. We little bit scared what will happen, but we are really lucky, we can say. The Telangana formed and our minister, Chief Minister Garu started a new vision and we started a new era of Telangana. So that's always fortunate, and he started with the growth story. Maybe more you have to listen from our Minister Garu, but today, something I will try to convey. As a visionary leader, the growth not only related to Hyderabad, but it starts from the rural. He focused on the more of welfare of the farmers, where the Kareshwaram project has been started. And apart from that, for them to survive, to make the livelihood better, more of uninterrupted free current. That's what he provided. And apart from that, again coming to city part, the drinking water was the issue. So that from Kaleshwaram, what has been pumped over here, Bhagirath, Mission Bhagirath. Maybe from Patal Sen, what has been pumped up at that time,
but our Chief Minister had made the vision of pumping from Kaleshwaram to Hyderabad, which is 600 feet above the sea level. Thank you, sir, for all the things happening for us. And apart from that, more of like, you will be seeing only Hyderabad is growing and with a lot of development. But the main focus started with decentralization of the state, having more than 33 districts at that time, as soon as the government formed. And now we are fortunate, maybe yesterday, Minister Garu or Chief Minister Garu announced 9 medical colleges. Coming 2025, we will be having, each district will be having a medical college. It is a one of its kind, and that's been, so that is one. And apart from that, rural growth, more of potential, how they can survive as a common man also, apart from a bureaucrat or maybe employed people in the cities. He started sheep farming, fish farming, who are related to the different fields and all that. There is a revolution in the rural sector, and because of the district decentralization, having a collectorate in 30 kilometers radius and a police commissionerate and a medical college, that the state in the districts also started transforming. And along with that, one more thing you people have to know. IT is not only now focused in Hyderabad. Our Minister Garu, now it started in the districts also. More than 5 to 6 districts, IT buildings have been launched, and the majority of the multinational companies also going to start the activity over there. All because of his great leadership. Once again, we all from CREDAI Hyderabad and CREDAI Telangana, being the real estate builders and the people of Hyderabad and Telangana, we are happy with them, and we are always be thankful for them. Apart from that, Hyderabad growth, one more thing we want to tell, the focus, why it is happening. Simple things. Many leaders, this is politically, I don't know, but we all came from Maharashtra. Something has to be conveyed. Anything, any government comes, any policy matters comes up, but there should be a commitment, more of serving the people, how we can make it happen. Because of this one person, Hyderabad has evolved as it is today. Thank you, sir. Thank you very much for making it happen. Starting in 2014, we have around 50,000 crores of IT exports. Now, recently more crossed around 4.5 crores. And earlier the employment was around 3 lakhs, and now it is around 9.5 lakhs. All because of this great personality who is more focused on the welfare of the people of the Telangana. And not much I want to say. If keep on saying, I can just make it more and more. I want to tell, we are happy with the government. We are proud being in Hyderabad. We are quite happy with the officials we are dealing with. And we are blessed to have a leadership like CM KTR Garu and KTR Garu. Thank you very much. I would request Vice President CREDAI Maharashtra, Sunil Kotwal Garu, to give his speech. We would like to felicitate the Minister, KTR, and for that I request my President, Pramod Khairnar, Shekhar Reddy and Ram Reddy to please come to felicitate KTR on behalf of CREDAI Maharashtra. Bouquet there.
I now request Secretary Vidyananji and Shantaramji, who is in charge of this study tour, to please come on the dais and felicitate the Secretary, Mr. Arvind Kumar. Please come. Friends, to begin with, I would like to say that it's an opportunity for all of us on this study tour to have a heart-to-heart dialogue with KTR sir. The reason I feel we are fortunate and the reason I feel this is an opportunity, because KTR sir is part of the government of Telangana. He is the Minister of Municipal Administration. He is the Minister for IT and Economic and Commerce Industry Development, and he is also taking care of the Telecommunication Ministry. I feel these are all the elements connected to our industry, and so I feel we are fortunate. I am humbled and obliged that the Telangana seniors, the stalwarts, the current team and the young generation have made it possible, and I thank them on behalf of CREDAI Maharashtra. Sir, today we are here from 24 cities of Maharashtra, and we are 220 plus delegates over here. In 3 generations, there are some developers, seniors, the youth wing is there, and the women's wing is also there. I'm glad to mention that when the core team was sitting and deciding where to take the study tour, it was unanimously decided we will go to Hyderabad. Sir, the entire India is talking about Telangana. Entire India is talking about the beauty of the smallness of the state and how the present government is taking care of each and every citizen, and that is what when we work in our cities, we also think about our cities. We feel each of our city should be economically vibrant, it should be affordable, and it should be livable. So we as developers now, we don't think about our projects and what we are making and what we are selling, but we are thinking about the city, and therefore we felt that we should come to Hyderabad and we should see how the government and the people are working together for the citizens of the state and the city. So we are thankful, and we would like to hear from you what are your vision, how you are looking into things, what is the thought process behind it, and how you are creating this state. As very nicely mentioned, it's a state of agriculture, it's state of innovation, it's state of future, it's state of all the segments of the society, and I feel that can be a role model and which you all are thinking about. Sir, as I mentioned, we are here for 3 days, and the stalwarts like Shekharji and Ram sir, they have given us an opportunity to see projects
which are villa projects, projects which are group housing, mega projects. We are going to see the IT park, we are going to see the plotted development, and we are going to see this innovation center which has been created. The thought itself is very powerful. It has been created for the young, talented people, and this can be their starting point, and they can take their own industry or their own business to heights, as well as they will contribute in the economic development of the city. On behalf of my President Pramod Ji Khairnar, my Secretary Vidyananji Bedekar, Joint Secretary Mr. Ashish Pokarna, Joint Secretary Mr. Bharti and Ravindra Khilari, and the tour in charge Mr. Shantaramji Patil, I once again thank KTR sir and all the dignitaries on the dais and Telangana and Hyderabad CREDAI extended family members. We feel at home over here. We are taken care from morning to evening, and we are really humbled and thanks. I take this opportunity to once again thank and bow down in front of all the dignitaries on the dais. Thank you. Now I request President Maharashtra, Shri Pramod Khairnar garu to give his speech. Honorable KTR sir garu, Chief Secretary Arvind Shekhar garu, NVS Reddy MD Hyderabad Metro garu, our CREDAI mentor and ex-president CREDAI National Shekhar Reddy garu, CREDAI Telangana and CREDAI Hyderabad Rajshekhar Reddy, Murli Krishna Reddy, Prem Sagar Reddy and G. Ram Reddy garu, and entire team of CREDAI Hyderabad and Telangana, and my dear friends. This is really biggest opportunity we got in this study tour. That Honorable KT Rao sir and under the guidance of Honorable Chief Minister KCR garu, we are witnessing the entire development of this state. Friends, since 2014 or before that, I have visited Hyderabad city when there was no split happen, and I have witnessed some friction, riots like that. And at that time, I have seen the real estate market of this Hyderabad city. But just after split of these two states and the charge taken by Honorable Chief Minister sir after 2014, the state has witnessed a drastic change. You can see due to peace and the vision, the entire scenario changes. The Honorable Chief Minister KCR garu sir has a 360-degree vision. He is not only focusing on infrastructure or real estate, but he is thinking of the basic Indian component, that is farmer. He has taken a lot of efforts to develop the Telangana, its lowest or endest part. He has revived everything, agriculture, weaving department. He has given free water and free electricity also to the farmers. Due to that, there is a large increase in the manufacturing or say growing the crops. Simultaneously, as Sunil ji said, the Honorable Minister has given all these departments which are taking the Telangana to the fastest development state in India. The basic concept of these IT parks, IT hubs and SEZ has been brought
into reality by Honorable Minister. And now in India, not in India, but this Hyderabad tea hub or Hyderabad tea work or IT market is going globally, and it will be a day come when the IT hub and this policy will take Hyderabad and Telangana to the topmost global hub of this industry in the world. There are so many projects going on, and only in 8 years, the Telangana government has done a lot of things. I request Honorable Minister to guide us or enlighten us by giving knowledge about how these changes they have brought. Because in a small span of 8 years, if the leadership is positive and if the entire environment is positive, how the scenario of any state changes. We are fortunate there, we are coming from Maharashtra. It is the fastest growing urbanization state in India. Maharashtra was leading in all sectors. Now also in India, Maharashtra is leading in all types of revenues like GST and all these things. But there is a lot of scope always to improve. So I will ask few questions to the Honorable Minister. Sir, please focus whether this is possible due to focus on a smaller state, or what are the different key factors which you are thinking to take this state far ahead from the other states? What is the future real estate, future of real estate in Hyderabad as well as Telangana, particularly regarding affordable housing? Because we have seen a lot of IT buildings, 7 crore bungalow or 5 crore flat. But what is the scenario of this affordable housing? I have learned that the government is taking itself the drive. Okay, sir. Yes, yes. So, इतना ही कहूँगा सर कि KCR सर के गाइडेंस में तेलंगाना बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है और आप उसे जेट के स्पीड से लेके जाएंगे. यही कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. थैंक यू सो मच. Now I request Prem Sagar Reddy Garu, President CREDAI Telangana, to give his speech and also do the introduction of our Minister KTR Garu. Respected our Honorable Ministers, Sri KT Ramarao Garu, Minister for IT and Municipal Administration and Urban Development. Sir Arvind Kumar Sir, the President of Maharashtra, CREDAI Maharashtra, Vice President, CREDAI Maharashtra, and NVS Reddy Garu sitting there, MD Metro, Devendra Reddy Garu, Director DTCP. We are happy that we have here with us Shekhar Reddy Garu, our past National President, and Ram Reddy Garu, sitting here, is a Secretary National, and we have here with us Murali Krishna Reddy Garu, Chairman CREDAI Telangana, and Srinivas Rao Garu, CEO T-Hub. So before, as Minister Garu, as he said, you need not introduce me. Your rights are exactly right because everybody knows you. I'm sure that everybody knows him. He is such a personality. So, again, I can tell you one thing, under his leadership as Minister for IT and MAUD, the Telangana has a rapid enhancement, and it has, what you call, emerged as a technology hub. I can tell you so. Whatever he speaks, we have been with him on the stage for few times, and whatever he speaks and whatever he promises, that will definitely turn into reality. That is, we are always confident, and in our sector, in our profession, like he whenever we invite him, he will definitely attend. And whatever he promises, he makes us, within few days, that will turn into reality. And we are, thank you very much, sir.
and we hope this will continue in future also. And I can tell you, sir, he has attracted numerous, because of his policies, because of the way, of his approach, I can tell you, he has attracted numerous global companies into Telangana, and that have created thousands of jobs for the youth. So he has a very good vision. He always thinks for another 15, 20 years. I think he is sure that he will create about 20 lakhs of employment in industrial sector also. So, and there's lot to talk about him. But one thing I tell you, I always prefer to speak very less and give more time to our Minister Garu. Why? Because we can hear him talk for hours together. And that is what you are going to witness now. I think we'll be hearing him talk for at least an hour today. And friends from Maharashtra, once again on behalf of CREDAI Telangana, I welcome you all, and I hope you'll enjoy your another 2 or 3 days stay here, and we wish you all the best. Thank you so much. थैंक यू. इन्होंने तो डरा दिया आपको कि मैं 1.5 घंटा बोलूंगा, 2 घंटा बोलूंगा. बेफिक्र रहो, ज़्यादा नहीं बोलूंगा. थैंक यू सो मच. अरे यू गाइस कैन कंटिन्यू टू सिट. ठीक, अच्छा हुआ. आप सभी को नमस्कार. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र. द एंटायर फैमिली ऑफ क्रेडाई महाराष्ट्र, प्रमोद जी, सुनील जी, thank you for coming from, I think, 24 districts of Maharashtra. I appreciate all of you taking the time out, visiting our state, trying to understand, trying to learn, and trying to also, I'm sure, teach us a few things that you've done well in Maharashtra. मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, but थोड़ी बहुत रिलेशनशिप है महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि मैंने 2 साल पढ़ाई की वहाँ पे पुणे में. मैं पुणे विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ, पर मला मराठी येत नाही, मराठी आती नहीं है. थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई किया है, तो थोड़ा बहुत तो समझ लेता हूँ, पर 2-4 अहम चीज़ सीख लिया था मैंने. हमारी वो पुणे विद्यापीठ गणेश खिंड जो बोलते हैं, तो उसके ठीक बाहर, तब मैं बात कर रहा हूँ 1995-96 की बात कर रहा हूँ. तो उस समय पुणे मतलब वहीं तक होता था. उसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ वो इलाका सब था, पर तभी कुछ नहीं था. फिर वापस मैं तब से लेके अभी तक वापस नहीं गया पुणे. बट हमारी ज़्यादातर इंटरेक्शन होती थी वहाँ बाहर, या तो वड़ा पाव खाने में, या बाहर जाके वहाँ चौपाटी थी, तो चौपाटी में वहाँ चाइनीज़ के बंडी लगते थे, चाइनीज़ फ्राइड राइस के. तो 2 ही चीज़ हमने सीखा है, शेजवान फ्राइड राइस पाइजे, पेप्सी पाइजे. उससे ज़्यादा मराठी तो सीख नहीं पाए. दोस्त काफ़ी है, अभी भी दोस्त तो काफ़ी है, पुणे में है, बॉम्बे में है, कहीं और जगह है. और एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि हमारे दूसरा भी एक वास्ता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का. जहाँ से आप लोग आते हैं, जहाँ से प्रमोद जी आते हैं, अभी संभाजी नगर बोलते हैं, उसको पहले औरंगाबाद बोलते थे, और परबनी, लातूर, नांदेड़ और कई सारे, हमारे चंदापुर, जितने भी ये सारे ज़िला हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका हमारा पुराना नाता इसलिए है क्योंकि हैदराबाद स्टेट जो थी, एक हैदराबाद संस्थान जो थी, इससे पहले आज़ादी से पहले ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के साथ ही थे, और हैदराबाद के बहुत ही अच्छे रिश्ते नाते वहाँ पे थे. साथ ही साथ कर्नाटक में जो आज बीदर, रायचूर, गुलबर्गा है, इनका भी हैदराबाद स्टेट के साथ, हैदराबाद राज्य के साथ काफ़ी सारे संबंध हैं. तो इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि शायद अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली तो अलग अलग राज्य हैं, महाराष्ट्र अलग है, तेलंगाना अलग है, बट रिश्ते नाते, ह्यूमन रिलेशंस काफ़ी सारे हैं. बट बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, लेट मी गिव यू 10-15 मिनट्स बिफोर आई गो इनटू द फॉर्मल प्रेजेंटेशन. 10-15 मिनट थोड़ा आपको तेलंगाना का कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं, और तेलंगाना राज्य हासिल करने के बाद क्या हुआ है ये भी बता दूं. आपको तो पता है हिंदुस्तान में 1947 के बाद कई सारे राज्य बने, कई सारे नए स्टेट बने. तेलंगाना राज्य की जो डिमांड है वो बहुत पहले से 50-60 साल से चलते आ रही है.
We've been fighting, we've been struggling, for the creation of a separate state for Telangana for the last 50, 60 plus years. In 2001, under the leadership of our current Chief Minister, Shri KTR Garu, he had launched his own party called as the Telangana Rashtra Samiti. And he started again, when at the age of 47, he started another battle for the statehood for Telangana. From 2001 until 14, he struggled really hard. He convinced the national political system, including parties, national parties, regional parties, etc., etc. He was able to gather the support of the people of Telangana and eventually led this movement for 14 years, despite many ups and downs. And eventually in 2014, Parliament has passed the bill, and eventually the state of Telangana came into existence on the 2nd of June 2014. But जब 2014 में तेलंगाना राज्य बनी थी, एक बार आपको यहाँ की हालात भी बता दूं, जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, तब उससे पहले अगर आपका कोई हैदराबाद आना जाना होता था, तो आपने शायद देखा होगा कि लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, शंकाएं थी कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्या होगा। ये जो लड़ाई चल रही है अलग राज्य की, इसको लेके फायदा होगा या नुकसान होगा, हैदराबाद जैसे शहर का क्या होगा, इसको लेके बहुत सारे शंकाएं थी। आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कंस्ट्रक्शन से हो, रियल एस्टेट से हो, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से हो। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था बहुत साल पहले कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर इंडियंस, ज्यादातर भारतीय आज विलेजेस में रहते हैं, 70% से ज्यादा विलेजेस में रहते हैं। बट ये भी बात सही है कि इंडिया इज एक्चुअली रन बाय इट्स सिटीज एंड टाउन्स। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आप तेलंगाना देखेंगे, हमारी अगर पूरा जियोग्राफी अगर आप देखेंगे, द एंटायर जियोग्राफी, द एंटायर एरिया ऑफ तेलंगाना, वी आर जियोग्राफिकली द साइज ऑफ साउथ कोरिया, 112,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जियोग्राफी है। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी साइज होगी मलेशिया की। हम करीब करीब 4 करोड़ हैं आबादी, जनता, तो मलेशिया के साइज के हैं। और हिंदुस्तान में अगर देखेंगे आप, तो आज हम 28 राज्यों में तेलंगाना 11 और 12 स्थान पे, 12वीं स्थान पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से और आबादी के हिसाब, जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से। तो हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम बीच में कहीं हैं। और आज अगर आप देखेंगे, तेलंगाना में सबसे अहम सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है हैदराबाद। साथ ही साथ हमारे 142 और, हैदराबाद के अलावा 142 और म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन है। बट जैसा अभी मैंने कहा आपसे, while India lives in its villages, India is run by its cities and towns. And the reason why I say that is because एक हमारी हैदराबाद शहर ऐसी है जहां से आज तेलंगाना का 45 से लेकर 50% तक GSDP यहीं से आती है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जितने भी अभी कार्यक्रम चलते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, इसी को लेके पूरा राज्य चलता है। महाराष्ट्र में भी या हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आप राज्य ले लो या दुनिया में कोई भी आप देश ले लो, सभी का यही हालत है। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं। हमारी एक बार बात हो रही थी सत्या नादेला जी से। सत्या नादेला जी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं और CEO हैं, वो हैदराबाद से हैं। एक बार आए थे यहाँ पे, तो हम लोग बात कर रहे थे। मैंने उनसे यही बात प्रस्ताव किया। मैंने कहा उनसे कि 50% तक आज हमारी आमदनी, आज हमारी GSDP हैदराबाद से आती है। तो उन्होंने कहा ना सिर्फ एक राज्य के लिए या एक देश के लिए लागू होता है, बल्कि हम जैसे कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉरपोरेशन के लिए भी यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पूछा उनसे कैसे। उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कॉरपोरेशन 200 से ज्यादा देशों में हम शामिल हैं, हमारी प्रेजेंस है, पर हमारी 80% रेवेन्यू दुनिया की 70 सिटीज से हमें मिलती हैं, जिनमें से हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बाकी कहीं और बेंगलुरु है, ऐसे शहर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज हिंदुस्तान में जो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सभी लोगों को ये बेसिक चीज समझना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, इंडिया को जो 5 ट्रिलियन ख्वाब है, 10 ट्रिलियन का ख्वाब है, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने का जो एक ख्वाब हमारी है, एक ख्वाहिश हमारी है, इसको अगर पूरा करना है तो हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए
कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएंगे, वो भी अर्बन पॉकेट्स में, हमारे सिटीज में, टाउन्स में, उतना ही हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और तभी जाके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये बात कई सारे लोग नहीं समझते, कई सारे गवर्नमेंट नहीं समझते। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि 2014 में जब हमारी राज यहां बनी थी, कई सारे समस्याएं थे। पहली, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड वाज द चैलेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की किल्लत थी, बहुत प्रॉब्लम थी। हफ्ते में 2 दिन पावर हॉलिडे डिक्लेयर किया जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री बंद करना पड़ता था, और फार्मिंग सेक्टर के लिए, फार्मर के लिए हम दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा पावर नहीं दे सकते थे। और घरों में समर आ गया तो पूरा दिन ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स ऑफ पावर कट। अगर आपको एक छोटा एक जूस स्टॉल भी चलाना हो, एक छोटा जेरोक्स सेंटर भी आपको चलाना हो, इन्वर्टर के बगैर, जनरेटर के बगैर काम नहीं चलता था। अपार्टमेंट अगर है कोई सिटी में, जनरेटर तो लगना ही लगना है। आप अपार्टमेंट में उतरते ही लिफ्ट चढ़ने से पहले आपको डीजल वाला आपको स्मेल आता था हर जगह। ये वाला हालत था। स्टेट का डिमांड था 10,000 मेगावाट से ज्यादा, बट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 7,000 मेगावाट, तो हम लोग पावर डेफिसिट स्टेट थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। और दूसरी बात, तेलंगाना राज्य बना एक नारे को लेके कि पानी में जो हमारी रिवर वाटर है, पानी है, उसमें हमें जो इनजस्टिस हमारे साथ किया गया, जो नाइंसाफी हमारे साथ किया गया, जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उसको करेक्ट करना था। और तीसरी बात, बहुत गरीबी, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स इन द कंट्री कहा जाता था तेलंगाना को, क्योंकि काफी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे 10 जिला थे, 10 में से हैदराबाद को छोड़ के बाकी 9 बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिलता था हमें, BRGF। 9 जिला को केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि ये बैकवर्ड जिले हैं। तो ये हमारी हालत थी 2014 में। ना बिजली थी, ना पानी थी, गरीबी हर जगह। हैदराबाद जैसे शहर के बारे में कई सारे शंकाएं हैं कि क्या होगा इसका, ये वाला हालत था। तो इसमें जब हमारी गवर्नमेंट बनी 2 जून 2014 को, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री KCR सर ने ठान लिया था कि ना सिर्फ हमारी तेलंगाना की जनता को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल की तरह, क्योंकि हमारे लिए एक, we've had the luxury of a clean slate beginning, we've had the good fortune of a clean slate beginning, क्योंकि नया राज्य बन रहा है, पहली बार एक नया सरकार बन रही है, तो उसमें आपको आपकी खुशनसीबी है कि यू कैन स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंडसेट एंड अ फ्रेश अप्रोच। तो पिछले 9 साल में, क्योंकि हमने 9 साल कंप्लीट किया इस जून में, अभी 10वीं साल चल रही है हमारी, पिछले 9 साल में उन्होंने काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज किए हैं। चंद चीजों के बारे में मैं कहूंगा और बाद में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। पहली बात मैं तो ये कहूंगा आपसे, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे यंगस्टर भी हैं, विमेन लीडर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और 24 जिला से हैं महाराष्ट्र में। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, संक्षिप्त में कहने की कोशिश करूंगा। पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी हमारी तेलंगाना राज्य की 1,14,000 रुपया, 1,14,000 रुपया, 1,14,000 rupees was the per capita income of Telangana. We were ranked somewhere in the 15th or 16th spot in India. But this year, as of March 31st, 2023, Telangana's per capita now is 3,17,000. We are the highest in the country. Our gross state domestic product, GSDP, राज्य के लिए GSDP, देश के लिए GDP, तो हमारी GSDP जो थी 2014 में, वो थी 5,05,000 करोड़, 5,05,000 करोड़. As of March 31st this year, it is 13.27 lakh crore. The growth, and remember this is despite 2 years of COVID. 2 साल लगातार कोविड, और कोविड के साथ साथ हमारा मोदी साहब के साथ बनता नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये 9 साल में 1 पैसा भी, 1 बूटी कौड़ी भी नहीं दिया तेलंगाना। यहां से लेना ही है, देना तो है ही नहीं। यहां से हम लोग 1 रुपया अगर टैक्स में देते हैं केंद्र सरकार को, वापिस हमें मिलता है 45 पैसा डेवल्यूशन के हिसाब से, बाकी जाता है उत्तर प्रदेश और कहीं और अन्य जगह। कोई इतराज नहीं हमें, बट कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हम
देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश से वापस नहीं लेते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, Telangana is less than 2.5% of India, but Telangana's contribution to India's GDP is 5%. We literally punch double our weight. मतलब एक 50 किलो वाले बॉक्सर और 100 किलो वाली बॉक्सर के साथ लड़ रहे हैं तो वो वाला हालचाल है। तेलंगाना पंचेस डबल इट्स वेट। ये कैसे हुआ? पर कैपिटा कैसे बढ़ा? प्रोजेक्ट कैसे बने? क्या क्या किया गया? मैं आपको 2-4 चीज बताता हूं, आपको ये जान के ताजुब भी होगा। You will be very surprised to know this. दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न की कैंपस कहां है? कोई बता पाएंगे आप में से? जी, हैदराबाद। दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न की कैंपस सियाटल में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, हैदराबाद शहर में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जाने से पहले देख के जाइएगा जरूर। 3.1 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस है, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, क्या शायद 2-3 किलोमीटर होगी यहां से, जरूर देखना। और एक बात बताता हूं आपको, गूगल नाम तो सुना होगा, एप्पल, मैं राहुल नहीं बोला, गूगल बोला। गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, सेल्सफोर्स, माइक्रॉन, क्वालकॉम, नोवार्टिस, ZF और सर्विस नाउ और कई अन्य सारे कंपनी हैं। इन सभी का दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कैंपस, दुनिया का, उनके हेडक्वार्टर के बाहर, गेस करें कहां पे है? थैंक यू, फाइनली आप लोग आ गए मेरे रास्ते पे। हैदराबाद में। ये भी देखिएगा जरूर, गूगल का यहीं पे है, फेसबुक यहीं पे है, एप्पल यहीं पे है, माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया का सेक्शन लार्जेस्ट कैंपस यहीं पे है, माइक्रॉन, क्वालकॉम, मेट्रॉनिक, नोवार्टिस, ज्यादा दूर नहीं, अगल बगल में है सारे, आप देख सकते हैं। क्वालकॉम एकदम पीछे है। और एक और बात जान के आपको ताजुब हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर पता है आपको कहां पे है? जहां आप बैठे हैं वही है, टी हब जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर है टेक्नोलॉजी की। और ये 18 एकड़ जमीन जो अगल बगल में है, यहां पे टी हब है, एकदम इसके ठीक बाहर टी वर्क्स हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी है। उसको लग के एक और बिल्डिंग बन रही है, इमेज टावर, इनोवेशन इन मल्टीमीडिया, एनिमेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। 1.6 मिलियन स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बन रही है। इन तीनों को मिला के ये हो गया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस। क्योंकि इनोवेशन पे, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो या टेक इनोवेशन हो या एनिमेशन में गेमिंग, एंटरटेनमेंट या मल्टीमीडिया की इनोवेशन हो, सारे चीज एक ही कैंपस से अगर आप देखेंगे जोड़ के, तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है। एक और बात आपसे मैं कहता हूं, हम सभी लोग ने कोविड के, वी हैव जस्ट come out through that COVID phase. Everybody went through COVID, everybody had somebody in the family or friends who was affected. Some people have unfortunately passed, etc., etc. I would request you to think about this, what I'm about to say. Not only in technology, we are also a leader in biology. आपको ये जान के आश्चर्य होगा, दुनिया की वैक्सीन्स, अगर आप देखेंगे ह्यूमन वैक्सीन देखेंगे प्रोडक्शन, हैदराबाद दुनिया की वैक्सीन कैपिटल है, नॉट इंडिया। वी प्रोड्यूस 900 crore doses of vaccines every year, which is 33% of global vaccine production. Even that happens from Hyderabad. I request the youngsters here, जितने भी हमारे youngsters यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ आप ये अच्छे अच्छे बिल्डिंग देखें, बल्कि आप थोड़ा समय लीजिएगा। एक 40 किलोमीटर की दूरी पे जीनोम वैली है, जहां से, जैसा अभी मैंने कहा, वैक्सीन प्रोडक्शन 900 करोड़ वैक्सीन वहां से बनते हैं। नॉट ओनली वैक्सीन्स, वी प्रोड्यूस 40% ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स। वी आर द लीडर इन इंडिया इन फार्मास्यूटिकल एंड बल्क ड्रग्स प्रोडक्शन। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे largest number of US FDA approved manufacturing facilities, US FDA approved मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रीज दुनिया के सबसे ज्यादा कोई एक राज्य में अगर है दुनिया में, तो वो है तेलंगाना में। सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू जर्सी,
सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू जर्सी, लार्जेस्ट इज तेलंगाना. तेलंगाना में 214 है यूएस FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, न्यू जर्सी में 189 है. Point I'm trying to make is we are not only a leader in technology, और हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बैंगलोर को किसी शहर ने लगातार 2 साल ठुकराया. पिछले 2 साल we have created more technology jobs in India than Bangalore. You will be surprised. Last year it was 33% of the total technology jobs in India coming from Hyderabad. This year, it is 44% of the total tech jobs created in India coming from Hyderabad. And that shows in our growth story. अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं आता है क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग बोल तो अच्छा लेते हैं, कई बार झूठ भी बोल देते हैं, आपके मन में होगा शायद. नहीं, मैं कह रहा हूं क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात की, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. बट एक बात बताता हूं, पक्का है, जस्ट टू गिव यू नंबर्स अगेन, क्योंकि नंबर तो झूठ नहीं बोलेंगे, आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे आपको, और रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकते NASSCOM के, STPI के. 2014 में पूरे हैदराबाद और तेलंगाना में IT एम्प्लॉयमेंट था 3.23 लाख करोड़. 3.23 लाख, सॉरी नॉट करोड़, 3.23 लाख. 3,23,000 people were working in technology in 2014. Abhi, right now, it is around 10 lakhs. So explosive growth, more than 300% more than. And if you look at my IT export numbers, you will understand what I'm saying. In 2014, when the state was formed, our IT exports were 57,000 crores. Now, it is 2,41,000 crore. 400% growth. कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? पहली बात तो हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने ठान लिया था कि ये बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. तो उन्होंने जब पद संभाला 2014 जून में, first 6 months he took it upon himself as a challenge to solve the problem. Today, I stand here proudly. When I say this, I beam with pride. We were a state with 7,778 installed megawatts of installed capacity of power. But today, as I stand before you, the state is producing nearly 24,000 megawatts of power. We are a surplus state now. We were a power deficit state. अभी हमारी surplus state हो गई. क्यों, कैसे हुआ? Simple fundamental thing. हिंदुस्तान में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप रिस्क ना लो, आप कर्ज ना लो, डेट मत लो, ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, औकात से ज्यादा उचको मत. एटलीस्ट हैदराबाद में तो बोलते हैं, पता नहीं महाराष्ट्र में बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि आपके यहाँ भी सारे जगह बोला जाता है. हिंदुस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है कि ज्यादा औकात से ज्यादा मत सोचना, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पढ़ो लिखो, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, बस उसी हद तक, ज्यादा ख्वाब नहीं देखना है, ज्यादा ऊंचा नहीं देखना, ये बोला जाता है. बट सिंपल चीज है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी अगर ग्रो करना है, आपको मैं एक कहावत याद दिलाना चाहता हूं. JF केनेडी करके एक काफी पॉपुलर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी एक कहावत है, शायद अगर आप गडकरी साहब के ऑफिस गए होंगे तो आपने वहां पे भी देखा होगा, ऊपर लिखा रहता है. आप में से अमेरिका कितने लोग देख चुके हैं? अमेरिका, क्या बात कर रहे हो? यूरोप कितने लोग देख चुके हो? अच्छा, तो काफी सारे लोग अमेरिका नहीं देखे अभी, आपको ले जाना पड़ेगा. तो क्रेडाई महाराष्ट्र आपको ले जाना पड़ेगा प्रमोद जी, आप एक टूर ले चलिए अमेरिका, तब जाके पता चलेगा कि हैदराबाद क्या कर रही है. तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था 1950s में, आज की बात नहीं, 70 साल पहले. काफी सारे लोगों को यह लगता है कि अमेरिका हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इट इज रिच. दैट इज नॉट द केस. अमेरिका इज रिच बिकॉज इट हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बेसिक चीज है. सुनने के लिए सिंपल लगेगा, बहुत आसान लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा, बट एक्चुअली ये बेसिक चीज बहुत सारे गवर्नमेंट समझती नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक पैसा नहीं लगाओगे तब तक कैसे कोई राज्य का विकास होगा, कैसे तरक्की होगा, कैसे ग्रोथ होगी. तो इस सिंपल चीज पे हमने ध्यान दिया. और दूसरी चीज हमें बार बार बताया जाता है कि कर्ज ना लो. भाई कर्ज लो, पर इन्वेस्ट करो प्रोडक्टिव सेक्टर में. अगर 1 रुपया का कर्ज लेते हो तो उस 1 रुपया का 2 रुपया बनाओ, कर्ज पे करो, कीप ग्रोइंग. अदरवाइज हाउ विल यू ग्रो विथ योर ओन मनी, विथ योर ओन बूटस्ट्रैप्ड इक्विटी? किस हद तक जा पाओगे?
सिंपल फिलॉसफी इज इंडियन मेंटालिटी में हमारी जो एक वो कंडीशनिंग कर दी है कि कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लो बट प्रोडक्टिव सेक्टर में काम लगाओ, पैसे लगाओ। कर्ज लेके उड़ाओ मत उसको, कर्ज लेके डेट रेज करके आप प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाइए। हमने वही किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भाइयों से बहनों से कि आप एक बार अपना फोन निकालिए प्लीज और गूगल खोलना प्लीज। गूगल में टाइप करिएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कोई एक जवाब दे दे। आप ट्रिगर हैप्पी हो, आप जानते हो कैसे? पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपको जवाब मिलेगा, गूगल देगा आपको। पता है कालेश्वरम कहां है आपको? एकदम आपके महाराष्ट्र को लग के है। ये हमने बनाया गोदावरी नदी पे, 4 साल में हमने बनाया। पर बदनसीबी की बात तो ये है कि मैं अगर आपसे पूछूंगा थ्री गॉर्जेस डैम का नाम सुना है क्या? कितने लोग सुने होंगे? थ्री गॉर्जेस, चाइना, काफी सारे लोग सुने। कालेश्वरम का नाम कितने लोग ने सुना है? 1 2 3 4। नहीं, आप तो ये तो सिंपैथी वाला हाथ हो गया, आधा आधा। आपने सुना नहीं, बस ऐसा ऐसे ही उठा रहे हो। बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग बात लगातार करते रहते हैं कि चाइना लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, 100 दिन में 100 मंजिल वाली इमारत खड़ा कर दिया। ये बात हम लोग करते रहते हैं, वीडियो चलते रहते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको जानकारी तक नहीं है कि जो आपको महाराष्ट्र को लग के है गोदावरी नदी, जो नासिक से उभरती है हमारे सुनील जी के यहां से, उस गोदावरी पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ खर्च करके हमने बनाया। 1 लाख करोड़। तो आपको लगता होगा 1 लाख करोड़, और बाय द वे इसमें 1 लाख करोड़ में 1 रुपया भी मोदी साहब ने नहीं दिया। बताना जरूरी था, वरना कहीं भाजपा वाले हैं तो वो लोग बोलने लगेंगे नहीं ये तो सब मोदी ने बनाया। मसला ये है, समस्या ये है कि कोई बीजेपी वाले है क्या इसमें? हाँ, रहेंगे काफी सारे, रहेंगे काफी सारे। बाहर जाके बोलना, कोई बात नहीं, मेरे सामने मत बोलो बस। समस्या ये है कि हम लोग अपना खुद का प्रमोशन ठीक से नहीं करते हैं। हम लोग अपना खुद का प्रमोशन ठीक से नहीं करते हैं। काम तो करते हैं बट प्रमोशन नहीं करते हैं। 1 लाख करोड़ हमने खर्च किया। 1 लाख करोड़ क्यों किया, करना क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तेलंगाना का भूभाग, गोदावरी चलती है 80 मीटर के सी लेवल पे, 80 मीटर अबव सी लेवल पे गोदावरी चलती है। बट तेलंगाना का सारा भूभाग ऊपर है, 200 मीटर ऊपर, 300, 400, 600 मीटर ऊपर। तो एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है, हमने महाराष्ट्र के साथ एक समझौता किया, एक बायलैटरल एग्रीमेंट हमने कर लिया कि हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट ना हो। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब, उनके साथ हमने एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया, और एक प्रोजेक्ट हमने 4 साल में खत्म किया। इस 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इससे हुआ क्या? हुआ यह है कि 45 लाख एकड़ जमीन, इससे पहले जिसका कोई इरिगेशन कमांड नहीं था, कमांड सोर्स नहीं था, एक रिलायबल सोर्स नहीं था, उसको आज एक जबरदस्त सोर्स मिल गया। 80 मीटर पानी, जहां 80 मीटर गोदावरी की हमने पकड़ा, उसको हमने मल्टीपल स्टेज लिफ्ट करके 618 मीटर की हाइट पे हमने उसको लिफ्ट किया। इसलिए दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसको चालू करके 4 साल हो गया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, पता है हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आज इसी समय कालेश्वरम से भी सब बड़ा, कालेश्वरम से भी बिगर पंप हाउसेस के सहित एक और प्रोजेक्ट हमने बनाया, पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन, जिसकी उद्घाटन आज सीएम सर कर रहे हैं महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 200 किलोमीटर दूर है। यहां पे हमने बनाया कालेश्वरम गोदावरी पे, और दूसरा कृष्णा रिवर पे, जो फिर से अगेन महाराष्ट्र से आता है। कृष्णा पे हमने बनाया पालमूरू रंगारेड्डी। इसको लेके क्या हुआ? इसको लेके हुआ यह है कि पालमूर के जरिए हम दे पाएंगे करीब करीब 12.5 लाख एकड़ जमीन को पानी, और कालेश्वरम से 45 लाख एकड़, जिसको लेके आज तेलंगाना, वी वर रैंक्ड 24th among Indian states for production of paddy, rice. 24th in 2014. You know where we are today? We have crossed Punjab and Haryana, and we are the #1 state which is producing paddy in the country today. Because of these projects that I've just mentioned, and because of the farm input scheme, Raitu Bandhu मतलब किसान बंधु। रैतु बंधु एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें फार्मर को हम गवर्नमेंट की तरफ से फार्म इनपुट असिस्टेंट देते हैं।
अभी तक 12 किस्तों में, 12 इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में हमने 73,000 करोड़ रुपया 70 लाख फार्मर के अकाउंट में सीधा जमा किया, विदाउट 1% डिविएशन, 1% करप्शन, 1 पैसा ऑफ करप्शन. That is what has led to agriculture revolution in Telangana today. We used to produce, in 2014, we used to procure as a state government 68 lakh metric tons of paddy, rice. But पिछले समर में हमने 68 लाख मेट्रिक टन हमने 2014 में हमने प्रोक्यूर किया था. इस साल समर में हमने 3.5 करोड़ मेट्रिक टन पैडी हमने खुद प्रोक्योर किया. तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ है. तो एक तरफ आईटी एक्सपेंशन चल रहा है, दूसरे तरफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन चल रहा है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. मैं अभी बात कर रहा था सुनील जी से और प्रमोद जी से. मैंने पूछा इन दोनों से, क्योंकि दोनों बिल्डर हैं. मैंने पूछा, सर आपको बिल्डिंग परमिशन के लिए कितने दिन लगते हैं महाराष्ट्र में? आपका हंसी खुद बता रहा है कि कोई एक निश्चित समय नहीं है, मनमानी चलता है. आपको एक बात बताते हैं, आपको सुन के ताजुब होगा. 8 साल पहले जब मुख्यमंत्री बने थे केसीआर जी, एक मीटिंग उन्होंने बुलाया था इंडस्ट्री वालों के साथ. इंडस्ट्री जो अन्य इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं बल्कि अन्य इंडस्ट्री हैं, उनके साथ मीटिंग बुलाया था. सामने बैठे थे हम और हमारे साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे. प्रदीप चंद्र जी करके आईएएस ऑफिसर थे, हमारे जयेश रंजन सर थे आईएएस ऑफिसर है, इंडस्ट्री के सेक्रेटरीज थे, सेक्रेटरी और कमिश्नर. तो सीएम सर ने एक क्वेश्चन पूछा उनके मुंह पे. सीएम सर ने कहा उनसे कि भाई एक बात बताओ, मैं अभी एक 7 घंटे का मीटिंग करके आ रहा हूं. मैंने इंडस्ट्री से पूछा कि परमिशन लेने में कितना वक्त लगता है. ये बस तेलंगाना बनने के 1-2 महीने के बाद की बात कर रहा हूं मैंने इंडस्ट्री से पूछा कि कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है आपको परमिशन लेने में. उनके पास कोई जवाब नहीं था. जैसे आप हंसने लगे वो लोग भी हंस पड़े. तो सीएम सर ने एक क्वेश्चन पूछा इनसे, पूछा कि गवर्नमेंट को परमिशन देने की क्या जरूरत है? इन लोगों के मतलब होश उड़ गए. आईएएस ऑफिसर है, आती है, 50-60 साल से, बुरा ना मानो अरविंद, किशोर जी बुरा ना मानो, 50-60 साल से आदत है कि आपके पास आए, बोले माए बाप परमिशन दे दो, हमारे मतलब कृपा करो. इनका आदत है. अब जब एक सीएम बैठे हैं आगे और पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को परमिशन देने की क्या जरूरत है, अभी लोग परेशान, बोल नहीं पा रहे हैं. मैं नया मंत्री बना, मैं खुद, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं. तो फिर 2 मिनट सोचे, 4 मिनट सोचे, 5 मिनट सोचे, फिर बोले ऐसा है सर कि कहीं एक दुर्घटना अगर हो गई तो हमें कम से कम जानकारी तो होना चाहिए ना कि कौन सी इंडस्ट्री है, क्या चीज है, कितने लोग काम करते हैं और क्या क्या मतलब किस तरह की काम करते हैं, पोल्यूशन करते हैं कि नहीं करते हैं, सब देखना पड़ेगा ना. तो सीएम सर ने बस यही कहा, ऐसा करो, सेल्फ सर्टिफिकेशन लागू करो. आज से एक नया कानून बनाते हैं. ये हमने नवंबर 2014 में किया था, जिसका नाम है, कानून का नाम है टीएस आई पास. आपने देखा होगा इजी पास, फास्ट टैग करके जो टोल पे रखता है ना, वैसे ही इजी पास जैसा हमने टीएस आई पास बनाया. टीएस आई पास का मैं फुल फॉर्म बोलता हूं आपको. टीएस आई पास का फुल फॉर्म हुआ तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम. अगर आप में से किसी को तेलंगाना में एक यूनिट लगानी है, आपको गवर्नमेंट से मिलने की जरूरत नहीं है. आप सीधा पहले ही दिन, अगर आपके पास जमीन है तो आप अपना काम, फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर सकते हो. कोई म्युनिसिपैलिटी की परमिशन की जरूरत नहीं, ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं. और all that we request of you is that you submit information online कि आपकी एक्टिविटी क्या है. टीएसआई पास पोर्टल में आप समाचार डाल दें कि आप कौन हो, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, कौन सी लाइन में आप पैसा लगा रहे हो, कितने लोगों को रोजगार दोगे, टैक्सेस का क्या होगा, और पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हो कि नहीं, आपको लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब उसमें डालना पड़ेगा. जब आपकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कानून से, मैं जो कह रहा हूं अभी एक भाषण नहीं दे रहा हूं, टीएसआई पास कानून है, लॉ है, एक्ट है. कानून के हिसाब से 15 दिन में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आपको हाँ या ना में जवाब देना है. परमिशन देंगे या नहीं देंगे, आप एलिजिबल हो कि नहीं, 15 दिन में जवाब देना है. अगर 15 दिन में हम जवाब नहीं देते हैं, क्या होगा? 16वां दिन ऑटोमेटिक अप्रूवल, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूवल एज पर द एक्ट. और 16वां दिन एक और काम भी मैं कर सकता हूं.
हमारे सीनियर IAS ऑफिसर जो हैं, अरविंद हैं, किशोर जी हैं, NVS रेड्डी हैं। कानून मुझे मजबूर भी करती है कि 16वां दिन से अगर इन्होंने फाइल को रोका है, एक दिन मैं उनको 1,000 रुपए का फाइन पे लागू कर सकता हूं। हिंदुस्तान में कोई सरकार ने ये करने की हिम्मत नहीं की आज तक। अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि ऐसे ही बकवास बोल रहा है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पिछले 8 साल में हमने 24,000 परमिशन TS IPAS के जरिए हमने दिया। $50 बिलियन का निवेश हमने आकर्षित किया और 24 लाख लोगों को हमने रोजगार यहां पे क्रिएट किया, जिसमें अभी जैसे मैंने बताया Amazon का नाम मैंने लिया, गूगल का नाम मैंने लिया, ये सभी पिछले 9 साल में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट तो पहले आया था। बाकी जितना भी कंपनी का नाम मैंने लिया, अभी IT में हो, लाइफ साइंसेस में हो, इंश्योरेंस में हो, या लॉजिस्टिक्स में हो, टेक्सटाइल्स में हो, ये सारे ही चीज हमने TS IPAS के जरिए पिछले 8 साल में किया। जब TS IPAS सक्सेसफुल हो गई, फिर हमारे CM सर ने कहा, आप ये इनोवेशन या डिसरप्शन जो हमने इंडस्ट्रीज में किया, क्यों ना हम लोग म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में भी करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, अभी if you can start the presentation, can you please click the slide? I have told you all this basic overview कि हमारी आबादी क्या है, हमारे कितने म्युनिसिपैलिटीज हैं। नेक्स्ट। या हमने एक इंटरेस्टिंग चीज किया कि 10% हर म्युनिसिपैलिटी का बजट हम ग्रीन बजट, म्युनिसिपैलिटी हो या विलेज हो, ग्रीन बजट के नाते 10% हम ये मार्क करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गो बैक, द थर्ड पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट भी लोग खुद करते हैं, सेल्फ असेसमेंट है। बिल्डिंग परमिशंस, ना हमने जब TS IPAS जब सक्सेसफुल हो गया, जैसा मैंने कहा, हमने नया कानून लागू किया, TS BPAS, तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, जिसके नाते नो ह्यूमन इंटरफेस, आपको ना कोई टाउन प्लानर से मिलना है, आपको ना कोई ऑफिसर से मिलना है, अधिकारी से मिलना है। और सबसे अहम बात आपको बताता हूं मैं, सारे के सारे, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेन फीचर्स ऑफ TS BPAS, ये आप ले जाना, शिंदे साहब को बताना, दबाव बनाना, काम करवा लेना। अगर वो नहीं करते हैं तो हम आएंगे, हम करेंगे महाराष्ट्र में। तो 50 स्क्वायर यार्ड तक अगर आपका प्लॉट है, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है और ओनली रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इंस्टेंट। 50 स्क्वायर यार्ड तक। उसके बाद 50 से 600 स्क्वायर यार्ड तक कोई भी म्युनिसिपल एरिया में इंस्टेंट अप्रूवल, मतलब आप अप्लाई करो, अप्रूवल मिलती है। और 10 मीटर की हाइट रिस्ट्रिक्शन है उसमें रेजिडेंशियल को, और कॉमन एप्लीकेशन भी है, इंस्टेंट ऑनलाइन अप्रूवल है। ऑफ कोर्स दिस इज कंडीशनल ओनली ऑन वन कंडीशन, कि हम लोग आप पे इतना विश्वास लगा रहे हैं, बिल्डर हो या इंडिविजुअल हो, आप पे इतना भरोसा रख रहे हैं कि आप जिम्मेदार रहेंगे और आप कंप्लायंट रहेंगे। अगर आप नॉन कंप्लायंट रहेंगे तो पावर पूरा कानून में मेरे पास है कि आपका पूरा इमारत में गिरा दूं, पूछे बगैर, नोटिस दिए बगैर, आपको कोर्ट जाने का मौका देने के बगैर। तो सबसे अहम बात यह है कि थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन और जीरो करप्शन, ये हमने किया। और लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डर्स के लिए 600 से ऊपर ऑल नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, हमने 21 दिन में हमने परमिशन देना ही देना है। अगर 21 दिन में हम देते नहीं है तो 22वां दिन ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूवल है। ये आपको हिंदुस्तान में कोई और राज्य में सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने बता तो दिया, काम कैसे चल रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यहां से जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, आप हमारे क्रेडाई के हमारे भाई हैं, यहां पे हमारे राजशेखर है, राम रेड्डी जी हैं, मुरली कृष्णा रेड्डी हैं, प्रेम सागर रेड्डी हैं, शेखर रेड्डी हैं, आप इनसे बैठे आराम से, आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं जानता हूं, मैं 10 साल मंत्री रह चुका हूं, 10 साल करीब रह चुका हूं। मैं ये भी जानता हूं कि बाहर, हिंदुस्तान में बाहर के सिटीज में क्या क्या होता है परमिशन लेने के लिए, देने के लिए। पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं कई सारे लोग, मालूम है मुझे। पर आज हैदराबाद में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे यहां ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, कोई लेन देन की बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। इसीलिए आप नंबर देखिएगा, ये है हमारे एप्लीकेशन और जितने अप्रूवल्स हमने दिया है। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, मैं आपके
सुनील जी को और हमारे प्रमोद जी को मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, आपके मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे जैसा मैंने कहा दबाव बनाइए, बताइए उनको, उनके अफसर यहाँ आए, सीखे। आज कर्नाटक से हमारे कुछ मंत्री लोग और कुछ अफसर लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है यहाँ पे। वो लोग हमें हराने के चक्कर में यहाँ पे आए हुए हैं। कोई बात नहीं, बट अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी यहाँ पे सीखने में लगे हैं। बाहर सीख रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी कैसे किया जाए, परमिशन कैसे लिया जाए। उत्तर प्रदेश की भी टीम आई थी योगी जी के यहाँ से 2 दिन पहले, उन्होंने भी ये देखा, उनको भी लागू करना है यूपी में। तो इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो तेलंगाना आज करती है बाकी हिंदुस्तान कल करती है। वी आर अ ट्रेंड सेटर, वी आर अ टॉर्च बेरर, वी आर अ ट्रायल ब्लेजर। Let me also tell you, we have not only planned for today, this beautiful city Hyderabad. I have to give credit where it's due. While my government and our honorable, under the leadership of our honorable chief minister, has done exceedingly well in terms of creation of infrastructure. आप अगर 6 महीने के बाद हैदराबाद आएंगे, कई सारे जगह आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये नया फ्लाईओवर आ गया, ये नया एक अंडरपास आ गया, ये क्या हो रहा है, एक नया मेट्रो लाइन लग रहा है। तो हमने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। आपने देखा होगा सिटी में उतरते ही आपको एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेसवे है 12 लेन वाली, जो सीधा आपको शहर के अंदर लाती है। 160 किलोमीटर वाली एक्सप्रेसवे है